challenge yet to the opposition bloc ahead of the Lok Sabha polls. Seat sharing talks have hit a roadblock. Both Mamata Banerjee as well as Bhagwant Mann have made it very clear that their parties will go solo in the Lok Sabha polls in Bengal and Punjab. The Congress is still hopeful of a resolution to the crisis, while Adhir Ranjan Chaudhary, one of the permanent irritants as far as the relationship between Mamata Banerjee and Congress party, has slammed Mamata, calling her an opportunist and saying his party is not at her mercy, though figures dictate completely otherwise. Both Jairam Ramesh and Rahul Gandhi have made placatory statements. In Punjab, Chief Minister Bhagwant Mann has made it clear that his parties will not have an alliance with the Congress and that AAP will fight all 13 Lok Sabha seats. The BJP has termed these developments as the death knell of I.N.D.I.A Bloc. Where does it leave the opposition alliance? Does this sound the death of the India alliance? Or will the India alliance be able to somehow salvage the situation? Will the Congress party agree to terms of these regional forces? Will the party leaders in Punjab and Bengal agree to any such statement? The million-dollar question is it the beginning of the end of I.N.D.I.A Bloc? Before we start to discuss the story, let's play key sound bites and then I will go to my guest to discuss what exactly Mamata Banerjee took this decision and what does it mean for politics of West Bengal. Listen in. এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दूरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्ता पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। इसलिए हर किस्म के बहाना बनाते हुए इंडिया जोट के खिलाफ वो तरह तरह की बयानबाजी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो करना जारी रखी है। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 हो सकता है। कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा। To discuss this political situation which has resulted from that shocking statement given by Mamata Banerjee, I'm joined by my colleague Gargi Guha Thakurta, who's from West Bengal. Suman Bhattacharya is a journalist and political analyst from Bengal. Prakash Chandalia, editor Mahanagar Media Group from Kolkata. Professor Chambi Puranik and correspondent Mohit Malhotra. And we will discuss the entire situation which is panning out right from West Bengal to the state of Punjab. Suman Bhattacharya, I'll come to you first. What do you make of this statement which was given by Mamata Banerjee? And did you see it coming? Well, okay, it was evident. Let me tell you, Piyush ji, Mamata Banerjee, as you have said, is master of making headlines. The statements which you are showing, that was in the afternoon, just a few minutes before, she said that, she could die in a motor accident which happened, and his car was attacked in a convoy. Her car was attacked in a convoy by an outsider person. So she is master of making headlines. And why she did so? She did it so because
it was clear that, Adit Chaudhary or the state Congress was not ready to go with her party. Rather, they were keen to go with the left. Because, that is good for the West Bengal Congress because they will get a better deal out of that. Just like Bhagwant Mann was not ready to, do any kind of adjustment with Punjab Congress. State Congress is also not ready to do any kind of adjustment with the Trinamool Congress because they thought that will give them the liability of taking all the onus and responsibility of the allegation of corruption, which was going around for the last 2 years in the Bengal politics. So it will be better for them to go along left, who is a partner for Congress in the national level and in the state level for the last few years. So that was Congress, which played the card very cleverly. They pushed Mamata in a manner where Mamata had no other option than to say that I have no relationship with Congress in Bengal. It's a clever play, and let's see how it happens. It might give advantage to Mamata also, because then the anti-TMC vote, which is substantial in Bengal, and from which BJP was benefited in the last 2019 election, that might be divided, and Congress and left combination might enjoy the fraction of the vote which is anti-Trinamool, anti-establishment, and anti-Mamata. Suman, one other thing is that, do you seriously see Congress gaining out of this? Because a party which is not much of an entity in the state of West Bengal, winning only 2 seats, don't you think that and also the fact is that by doing this, isn't Mamata Banerjee repeating what she did in 2019? Leaving the field open for West Bengal, as you were just saying, to appropriate all that anti-Mamata, anti-establishment votes to her side. What does the Congress exactly gain anything out of this? I feel, if you ask me very honestly, Piyushji, you are absolutely right. It is Congress gain. Why it's Congress gain? It is Congress gain because Congress will say, we have not left the alliance. It is Mamata Banerjee who had decided to go alone. So please judge who is actually fighting BJP. After the Telangana win, there is a chance that the minority vote, which is huge in Bengal, and 30% in the total Bengal, and which is concentrated in 2 major districts where really Congress has base, what Adit Chaudhary mentioned, the 2 minority-dominated districts, Murshidabad and Malda, their Congress might benefit from it. And as you said, Congress, which was a non-starter in Bengal, if they go along with left, and if they can manage to win still 2-3 seats, they will be better to bargain with Mamata, in post-election scenario. Suman, one more question before I go to my other guest and take forward this discussion. Right, I'll go to Prakash Chandalia. Mr. Prakash, this particular event was shocking. It dented the I.N.D.I.A alliance, but it was not completely out of the blue. People were expecting that, all is not well with the BJP, with the Congress and Trinamool alliance. And the way Adhir Ranjan Chaudhary was speaking out of turn, you remember when the ED raid and all and post that assault of ED officers happened, he was as acerbic as the BJP was. The fact that Congress leadership allowed him to talk the talk, does it mean that, Congress leadership was also game to the statement which are being made by Adhir Ranjan Chaudhary? जी ब्रजेश, बात यह है कि बड़ी मछली हमेशा राजनीति में छोटी मछली को खाती है। 1997 में, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, राजनीति में बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। 1997 में ममता बनर्जी जिस पार्टी में थी, उसी पार्टी को छोड़ करके इन्होंने त्रिमूल का गठन किया, और तब से लेकर आज तक ये कांग्रेस को खत्म करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। ममता बनर्जी की 2 लड़ाइयां हैं। पहली लड़ाई है बंगाल से कांग्रेस को साफ कर देना, और दूसरी लड़ाई है बीजेपी के वर्चस्व को कम करना। बीजेपी पूरे देश में जिस प्रकार से माहौल बना है, उसमें बंगाल में बहुत तेजी से उभर करके आगे आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली और तृणमूल को 22 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। और अगर 2021 के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली, जबकि बीजेपी 77 तक पहुंच गई और तृणमूल को 213 सीटें मिली। ये सारी चीजों को देखें, और अगर परस्पर बात करें तो ममता बनर्जी की एक राजनीति रही है
कि वह गांधी परिवार के साथ तो थोड़ा बहुत मीठा रिलेशन बनाकर रखना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस के और विशेष करके बंगाल में कांग्रेस के जो अधीर चौधरी हैं उनके साथ इनके संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। और यही कारण है कि अधीर चौधरी हमेशा ममता के खिलाफ बहुत कड़वे बयान देते हैं जो तृणमूल को नुकसान पहुंचाता है, और ममता बनर्जी भी वही करती हैं। मैं सुमन की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर 30% 32% के आसपास माइनॉरिटी की आबादी है, और जिस पर जो पहले वाम मोर्चा के पास में वोट थे वो बटकर के बाद में तृणमूल के पास में आ गए, और ये पहले कांग्रेस के पास में भी थे। मुस्लिम वोटरों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो कांग्रेस के साथ भी रह सकता है। कांग्रेस भी सेक्युलर पार्टी है। आप आज के ममता बनर्जी के बयान को अगर नोट करें तो उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी सेक्युलर है। अगर वो कहती है कि मैं IND में भी हूं और मैं सेक्युलर भी हूं, तो उनके इस बयान का बहुत गूढ़ अर्थ निकालना चाहिए कि अगर आप इंडियन गठबंधन में भी हैं और आप स्वयं को सेक्युलर कह रही हैं और कांग्रेस से अलग होने की बात कर रही हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक प्रकार से कांग्रेस पर उंगली उठाना भी है। कांग्रेस का संगठन बंगाल में बहुत कमजोर है, तृणमूल शक्तिशाली है, और ये किसी भी हालत में, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक सीट पर यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ, जो सीट कांग्रेस ने जीत ली। कुछ दिनों के बाद में वो कांग्रेस का MLA है, वो तृणमूल ज्वाइन कर लेता है। तो ये इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए यहां पर 1 इंच जमीन भी छोड़ने वाली नहीं है। ओके लेकिन प्रकाश जी, आपको लगता नहीं है कि जब कांग्रेस की जमीन नहीं है, कांग्रेस कोई तृणमूल के लिए खतरा नहीं है, तो इंडिया अलायंस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस को क्या फायदा होगा? देखिए, ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा है कि मैं इंडी गठबंधन से अलग हूं। उन्होंने कहा है कि मैं तो इंडी गठबंधन में हूं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि आप इंडी गठबंधन में होने का दावा भी करती हैं, बिल्कुल, और आप और एकरूपता जो है, एक गठबंधन की एकरूपता होती है। कोई भी पार्टी आज 26-28 पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, और आपने देखा, जैसा सुमन ने भी कहा कि ममता बनर्जी का बयान आया, उसके तुरंत बाद भगवंत मान ने पंजाब के बारे में कह दिया कि हम भी अलग लड़ेंगे। हमसे आपने ये कल्पना कैसे कर ली कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे? तो मुझे लगता है कि ये इंडी गठबंधन के खात्मे की शुरुआत है। आज ये शुरुआत कर दी ममता बनर्जी ने, भगवंत मान ने उसको आगे बढ़ा दिया। कल और भी पार्टियां अगर इस प्रकार का बयान देती हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस को नुकसानदेह होगा, और इंडी गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा। I'll slip into a short break, but after the break, I'll go to Gargi to understand, whether this will be it's all good news for the BJP, and also go to Mohit to understand why Bhagwant Mann has said what he said today, and does this walking out of the alliance in West Punjab will have a cascading effect in the state of Delhi as well. Let's slip into a short break. वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। There is certainly a wall of capital coming into the clean tech, climate tech space, not just in India but across the world. This and more, streaming on world's first news OTT, News9 Plus. Download now. Welcome back. Gargi, are you able to listen to me? Okay. Am I audible? Yeah, you're audible. Am I audible? Thanks. Yeah, thanks, Gargi, for joining. I would like to understand from you, Gargi, that the BJP made a very surprising and a very big surge in 2019 by winning 18 seats. And they were inches close to the tally of the Trinamool Congress, and it shook the Trinamool Congress like never before. Do you see, by breaking away from the I.N.D.I.A faction, by not sharing any kind of, doing any kind of alliance with the Congress party and the left party, or whatever is left of both the parties, is Mamata Banerjee providing a clean sweep to the BJP to be the sole arbiter of all anti-establishment, all anti-Mamata votes? And is it going to help the BJP big way in 2024? Hello, am I audible? Yes, you're audible, Gargi. Please go ahead. Yeah, what I feel, I'll just take a small cue from Mr. Bhattacharya. What he said like Congress and left may gain.
But I'll just add something. Like, if you go by the Assembly 2021, the statistics, so vote share 48% goes to TMC, 4 point something, 73, which is almost 5% to Congress and almost 6% to left, and almost 38% to BJP. In this scenario, what I feel like, BJP stands to gain, and also Mamata, TMC stands to gain as the lone fighting face against BJP. So in both the cases, for BJP, hello? 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 Yeah, I am able to hear you. Gargi, please go ahead. Yeah, for the BJP, the only fighting face becomes TMC. So the minority vote for the opposition, it gets divided to some extent, what Mr. Bhattacharya said, like the minority vote. And for TMC, it's a win-win situation. So you feel that it's a win-win situation for you feel it's a win-win situation for the TMC? Yes, it is. Because Prakashji, what he just a while back he told about Byron Bishash, the MLA who was elected in Congress seat as on Congress ticket, he shifted side. So Mamata Banerjee knows how to, just a while ago, you also told about making headlines, Mr. Bhattacharya said. So she knows what is the ground scenario. The people here, they would like to go for the majority, not a party like Congress where there is hardly any organization. In fact, they would like to have a shelter with the majority party, especially the minority. They would try to find shelter with TMC vis-a-vis, the BJP threats, whatever, quote unquote threats, I would say. Okay. I'm also joined by Professor Chambi Puranik. Professor, what do you make of this, good to have you on our show. What do you make of this announcement which has been made by Mamata Banerjee in the morning, and, a couple of hours later, Bhagwant Mann also said that, that he's willing to fight all the seats alone and they don't want any kind of tuck up with Congress. Is this a sign of what is going to happen to Congress party in 3 months from now? Or is this the beginning of the end as far as the I.N.D.I.A alliance is concerned, sir? Definitely, I agree with Madam Gargi when she said that TMC has more advantages by taking this kind of form and resistance. It's almost like a failure of the seat sharing formula which the I.N.D.A is trying. It has not taken off at all. So I think in the context of this particular situation where she has asserted that I will go solo, that itself is a big shock to Congress. I think Congress is definitely going to have a setback in that region, not only in West Bengal, even in Punjab also. Because the problem with Congress is its big brother attitude. It always, the history of the Congress has shown that it has always tried to suppress the regional leaders, both in its own Congress party as well as in the non-Congress parties that are in power over a period of time also. So that is the kind of whatever contradiction that Congress has to settle itself, but it has not overcome from that also. The second thing is Mamata Banerjee saying that we will give you 2 seats only. She is sure that in other constituencies she has an edge over not only BJP but also Congress and the left combined. So I think that vote sharing which Gargi mentioned, yes, it's about 3.5 to 4% now. And they have lost, in Lok Sabha very badly. Taking that into consideration, I think, TMC is right. In my opinion, TMC is right. And you see the kind of whatever protest or kind of dissatisfaction, anger, Bhattacharya, Ade Bhattacharya, Bhattacharya has against Congress. Is that Congress people, almost, they are people who will betray us. Not Congress, TMC and others, they will betray us. So therefore, we should ask for minimum 10 to 12 seats now itself. I think, by yielding 10 to 12 seats, I don't think Congress is going to gain, nor TMC workers are going to support that kind of seat sharing with the Congress by Mamata. So I think taking into consideration as a shrewd politician,
and also knowing that in future, in the post-poll alliance, how things are going to emerge or the picture unfolds. I think she wants to have a bigger say in that also. Whether they are going to reach the mark of ruling majority or not, that is a different issue. And as an India alliance, I think it's a great challenge and test, litmus test for the India alliance. In the beginning itself, there are many things which have made it a stumbling block. So therefore, I would say that the position taken by TMC is right and realistic, and the kind of assertion that Adhir Ranjan Chaudhary is making is a desperate amount to show that, in case in Congress loses and stays with 2-0, I think that Congress leader has to take the blame, not Adhir Ranjan Chaudhary. This is how, I look at from the point of view of the Congress alliance or India alliance. So led by Congress. So Congress is in a very weak kind of position as far as Punjab and West Bengal are concerned. These are two important states where you nearly 50 to 58 seats are there. So there itself, I think Congress has to find its own moorings or strong base against whatever it is. Okay. So Trinamool Congress did a right thing by walking out of the alliance, says Professor Chambi Puranik. These two announcements triggered an avalanche of political reaction. Let's listen to what the top politicians have to say on this alliance, what the BJP has to talk about, say about this particular breakup of this alliance, and then we will resume our conversation. मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है. इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना. कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं. सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा. अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगा. मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं. उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं. जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है. देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का. इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी तीसरी हो जाएगी. भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है. भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान देखा आपने, राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है. तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था. देखिए, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, मैं जानता हूं कि अलग अलग स्टेट्स में, चाहे हमारी खुद की हमारी लोकल यूनिट्स हों या क्षेत्रीय दलों की अलग अलग सोच हो सकती है और कहीं ना कहीं गिव एंड टेक हम लोगों को करना पड़ेगा. लेकिन जिसने जो कुछ भी कहा होगा, मैंने सब देखा सुना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अंत में सब बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करेंगे और सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. सीट शेयरिंग से लेके कैंपेन स्ट्रेटेजी, और इंडिया गठबंधन एकजुटता से मजबूती से मैदान में उतरेगा. अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे. हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा. दीदी हमारे साथ ही रहेगी. It was my 14th birthday. On birthday, daughter waits for missing father. He was carrying a cake for his daughter. 49-year-old Birmingham-based Indian diplomat vanishes. He was grabbed and bundled into a car by 4 assailants. KLA claims responsibility. Demands Kashmiri separatists. Maqbool Bhatt's release. गोली मारो और फेंक दो. And within 3 days, they shot him dead. Abducted diplomat. Found murdered in Leicestershire.
I said, who ordered to kill him? To me, he said, I ordered it. And he never came home. Stop searching, start streaming. Download the world's first news OTT, News9 Plus, ahead of the curve. 20,000 people dead and counting. What's happening in the United States of America is unprecedented. You will have to pay for this. Pakistani spy agency ISI's sinister plan to target India. Training women to honey trap top civil and military officials. Counter honey trapping ops initiated by India. But gullible victims still caught in the web. Top military intelligence experts break down the web of deception. Colonel Hani Bakshi explains the phenomena of honey trap. जहाँ पे भी आपको लगेगा, उनको लगेगा कि there is a person who is susceptible to women, who's making a lot of women friends on the social media. That is where they will make a spoof account and then start luring the person. Colonel Pavitran Rajan decodes the psyche of the victim and the predator. But when you go up the chain, no one enforces it to people at the top. That disciplinary regime and the security regime is not enforced at the top. And they usually have a public profile where it is much more easier to approach that person. A News9 special on how modern technology has added teeth to the ancient spying tactic. Our story takes you inside Pakistan's honey trap machine. This and more, streaming on world's first news OTT, News9 Plus. Download now. Meanwhile, a couple of hours after making the announcement, West Bengal Chief Minister's vehicle met with an accident. Mercifully, nobody was injured that much. And, this is the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, after that accident. And meanwhile, this is where she's speaking about that accident. আমারও মনে হচ্ছে একটু জ্বর আসছে এবং গা গুলোচ্ছে, কারণ একটা কনকাশন তো হয়েছে এবং অনেকটা ফুলেও আছে। আমি সেই জন্য বেশিক্ষণ টাইম দেব না। আমার সাথে সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্ট অনুযায়ী আমার সাথে অনারেবল গভর্নরের মিটিং ভালোভাবে হয়েছে, সৌজন্যমূলকভাবে আমরা টোটালটাই ডিসকাস করেছি এবং 26 তারিখে আমি আবার আসবো, আবার দেখা হবে। আমি এটুকু তোমাদের বলে গেলাম। আমি জানি না একটা কোনো গাড়ি আমরা দেখতে পাই না, গাড়িটাকে আমরা বেরোচ্ছিলাম, ধরো আমরা একটা গলি দিয়ে বেরোচ্ছি তো, আর ওই গাড়িটা প্রায় 200 স্পিডে যাচ্ছিল, যেতে যেতে মানে আমাকে গাড়িটা প্রায় ড্যাশই করে দিত এবং গাড়ি মানে পুরো মরেই যেতাম ওখানে। ওখানে আমার যে ড্রাইভার ছিল পুলিশের, আমার যে ড্রাইভ করছিল সে, কারণ আমাদের তো হেলিকপ্টারে আসার কথা ছিল, আমরা আসিনি ওয়েদারের জন্য, ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকটা কষে এবং বুদ্ধিমানের কাজ করে ব্রেকটা কেসেছে। ব্রেকটা যখন কষেছে আমার পুরো ড্যাশবোর্ডটা এসে মাথায় লেগেছে, আর তখন একটা কনকাশন হয়েছে এবং কিছুটা রক্তও পড়েছে এবং কিছু ফুলেও আছে। এখন যখন সারা মাথাটা পেন হচ্ছে, তাই নিয়ে আমি কাজ করে গেলাম। So while the first shock was provided by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, where she claimed that she still is in I.N.D.I.A alliance, but she is going to fight elections in West Bengal
all alone, and any talk of alliance will now be a post-poll alliance and not a pre-poll alliance. The second shock was provided by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, where he said that his party is ready to fight all the 13 seats on its own and they don't need Congress that much. Though a similar sentiment is shared by Congress as well in the state of Punjab. To talk more on this, I'm joined by Mohit Malhotra. Mohit, जिस तरह के तेवर और जिस तरह का बयान आज भगवंत मान ने दिया, कांग्रेस भी कमोबेश उसी भाषा में बात कर रही है। क्या हम मान के चलें कि पंजाब में दोनों दलों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो रहा है? और पार्ट बी सवाल का, क्या इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलेगा? देखिए, दिल्ली में आपके दूसरे सवाल का मैं स्टार्ट करता हूं कि दिल्ली में देखिए कांग्रेस उस पोजीशन में नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह से जो अपनी डील है उसको आगे बढ़ा सके, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। और यही बात पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को लगती है कि हम यहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन में हैं, तो हम अपनी सीट्स क्यों कम करें। जबकि कांग्रेस का भी मानना है कि हम मेन ऑपोजिशन पार्टीज हैं और कांग्रेस में इलेक्शन से पहले जिस तरह से काफी हंगामा हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी आए, तो कांग्रेस को लगता है कि वो सारा सिनेरियो ऐसा रहा। और नवजोत सिंह सिद्धू का भी एक एलिमेंट कांग्रेस मानती है पंजाब में कि उनकी वजह से भी कांग्रेस हार गई, नहीं तो कांग्रेस काफी स्ट्रांग पोजीशन में थी। तो अब ये जो पूरा सिनेरियो है यहाँ पर इस बात को लेकर अटक गया पंजाब में कि कांग्रेस चाहती है कि जो 8 लोकसभा सीट्स जहां पर वो पिछले लोकसभा इलेक्शन में जीते हैं वो उनको दे दी जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नया सिनेरियो वहां पे रख दिया कि आप जितने सिटिंग एमएलएज हैं उनके बेस पे बात करें। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी स्ट्रांग पोजीशन में, आम आदमी पार्टी के पास 92 एमएलएज हैं पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उसी हिसाब से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बने और उसी के बेसिस पे ही कैलकुलेशन की जाए। लेकिन कांग्रेस ये नहीं मानती। कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार का जितना भी टाइम हुआ है यहाँ पर, उससे लोग नाखुश हैं और इसी चीज को वो एनकैश कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और अकाली दल अब तक एक साथ आने का उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस मानती है कि हम खुद ही अपने दम पे काफी अच्छी फाइट आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन वो आम आदमी पार्टी जिसको रोजाना यहाँ पर पंजाब कांग्रेस के लीडर टारगेट करते हैं, उनके साथ अलायंस में पब्लिक के बीच में जाना काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से यहाँ पर विरोध हो रहा था। लेकिन जो दिल्ली की आपने बात की, तो दिल्ली में कोई सिटिंग एमपी नहीं है, कोई एमएलए कांग्रेस के पास नहीं है कि वो कुछ इस तरह से कोई ऐसी डील कर सके, कोई अपना फॉर्मूला पेश कर सके। तो उनके पास वहां पे वो कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस और उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं पंजाब विधानसभा में। तो ये सारे सिनेरियो ऐसे हैं जिसको देखकर कांग्रेस को लग रहा था कि हमें साथ में नहीं आना चाहिए। और दूसरा, पंजाब की पब्लिक में नाराजगी हो सकती थी, ये बात शायद आम आदमी पार्टी को भी पता है। और इसी वजह से जब आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर हम सिर्फ 4 से 5 सीटों पर लड़ेंगे, अगर कांग्रेस का फॉर्मूला मान लिया जाए, तो एक जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है कि आपको ऐसी क्या मजबूरी थी, आप सरकार में हैं, आपके पास 92 एमएलएज हैं, फिर भी आपने कांग्रेस के सामने सरेंडर कर दिया। 4 से 5 लोकसभा सीट पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी को लगा कि खुद चांस लेना चाहिए, अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये फॉर्मूला सैटरडे को जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मीटिंग हुई है, जिसमें दिल्ली के तमाम जो सीनियर लीडर थे आम आदमी पार्टी के, वो मौजूद थे, वहीं पर इस बात को तय कर लिया गया था कि अब अकेले ही चुनाव लड़ना है। और हमारे पास ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि हर सीट पर 3 कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी ने शॉर्टलिस्ट भी कर रखे हैं और जिनमें से एक कैंडिडेट को फाइनल किया जाएगा। लेकिन अब लगता नहीं है, जिस तरह से आज काफी कॉन्फिडेंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया कि हम कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो उससे लगता है कि कांग्रेस के साथ जो पूरी बातचीत है वो खत्म हो चुकी है और अब पोस्ट इलेक्शन ही कोई अलायंस हो सकता है। उसमें क्या नतीजे आएंगे उसके बेसिस पे। मोहित, लेकिन एक चीज देखा गया, जैसे दिल्ली में भी दोनों चुनाव में देखा गया, 2014 के 2019 के, कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन जब लोकसभा आता है तो वहां पर वो खाता भी नहीं खोल पाती। दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत के जाती है। पंजाब में भी कांग्रेस 8 सीट जीत चुकी है। तो इसमें आम आदमी पार्टी को कितना रियलिस्टिक लगता है कि कितना कांग्रेस झुकेगी और कितनी सीटें वो आम आदमी पार्टी को देगी, या केवल वो उन्होंने मन बना लिया कि जितने हमारे एमएलएज हैं उसी प्रोपोर्शन में हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट भी चाहिए, उसके वरना ये बात आगे नहीं बढ़ेगी?
देखिए 2014 का जो इलेक्शन था उसको छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड आप देखें 2019 में भी कोई ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। कई सीट्स पर जो जमानत थी वो जब्त हो गई थी, तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी के पास भी अगर हम आंकड़े देखें तो उनके पास भी ऐसा कुछ है नहीं कि वो कोई बड़ा चैलेंज पेश कर सके फिलहाल। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक तरह से वेव थी आम आदमी पार्टी की और उसका नतीजा रहा कि उनको 92 एमएलए मिले हैं आउट ऑफ 117। तो यही वजह है कि वो कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी मजबूरी ये रही कि पंजाब आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहां पर अगर आप कांग्रेस की बात मान लेते हैं, कांग्रेस के फॉर्मूले पर आ जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी जो लगातार राइज करने की बात कर रही है और उसका रास्ता कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद पंजाब से आगे बढ़ता है। तो पंजाब में अगर ज्यादा सीट कांग्रेस को दी जाती तो आम आदमी पार्टी के लिए खुद को जो कांग्रेस का एक तरह से वो ऑप्शन पेश करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस को आपने मौका दिया, अकाली बीजेपी को मौका दिया, तो हमें भी मौका दीजिए। और हरियाणा में भी जो सीट्स कुछ चाहती थी कांग्रेस से आम आदमी पार्टी, वो सारा सिनेरियो पीछे जा सकता था, क्योंकि अगर पंजाब में बैकफुट पर आम आदमी पार्टी आती तो हरियाणा में जो 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही थी वहां पर भी कांग्रेस कह सकती थी कि आपका तो यहाँ पर कोई बेस ही नहीं है, आप किस आधार पे सीटें मांग रहे हैं। पंजाब में तो आपने हमसे हमारे सामने सरेंडर किया है, हमारे फॉर्मूले पे आपने हामी भरी है। तो यही वजह लग रही है। और दूसरा जो पंजाब कांग्रेस का मेन विरोध था, अगर अलायंस हो भी जाता तो कांग्रेस को डर था कि उनके जितने भी वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लीडर्स हैं वहां पे, वो खुले मन से आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आएंगे एक मंच पर, और उनको लगता था कि अंदर खाने काफी ज्यादा उनको नुकसान होगा। इसी वजह से कांग्रेस भी अपनी जिद पर अड़ी रही कि अगर हमें कोई फॉर्मूला बनाना भी है तो वो 8 सीट्स जिन पर पिछली बार हम जीते थे, हालांकि उनमें से एक सीट आप देखिए जलंधर में चौधरी संतोख सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, वो कांग्रेस के हाथ से चली गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ है परनीत कौर, उस सीट को लेकर भी पंजाब कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज और स्टेट कांग्रेस चीफ ये बात कह चुके हैं कि हम परनीत कौर को अब दोबारा चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं एक्स सीएम कैप्टन, वो जा चुके हैं बीजेपी में, तो उनको सीट देने का सवाल ही नहीं उठता। तो कांग्रेस किस आधार पे इन सीट्स पे दावा कर रही है? जो 2 सीट्स में, एक में बाई इलेक्शन हार गए आम आदमी पार्टी से, जलंधर में आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग है, और पटियाला में तो अब कोई कैंडिडेट कांग्रेस किसको उतारेगी, एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को लगा कि हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज्यादा सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे तो उसका इम्पैक्ट हरियाणा में होगा, हरियाणा में हमें सीटें नहीं मिलेगी। गोवा में आम आदमी पार्टी सीटें मांग रही थी इंडिया अलायंस के फॉर्मूला पर। तो इस सारे सिनेरियो को देखते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सोलो यानी अकेले जाना ही उचित समझा है। मोहित, एक चीज और कि क्या जो कांग्रेस पार्टी है, तो इधर तो आम आदमी पार्टी का ये जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कांग्रेस में भी भितरघात चल रही है और दोनों पक्ष एकदम खुल के आमने सामने हैं, आपको लगता है इसका खामियाजा भी कांग्रेस को इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए मैंने कल एक न्यूज फाइल की थी, जो कांग्रेस ने अपनी 31 मेंबर्स की प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनाई है पंजाब के लिए, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। लेकिन उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है पंजाब कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जिनकी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बातचीत तक नहीं है, हाय हेलो नहीं है। तो वो किस तरह से बातें करेंगे, किस तरह से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे इलेक्शन कमेटी को लेकर? दूसरा, उसमें प्रताप सिंह बाजवा है, जिन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि गैंग्रीन, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि गैंग्रीन जब पैर के थंब में हो जाता है तो थंब को काट दिया जाता, नहीं तो गैंग्रीन की पूरी बीमारी आपके पैर में फैल जाएगी, पैर काटना पड़ेगा। उनका इशारा था कि कांग्रेस में गैंग्रीन है नवजोत सिंह सिद्धू और उनको निकाल दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा स्टेट कांग्रेस इंचार्ज के सामने आज कि अगर आप एक अंगूठा यानी एक थंब अपना पैर से निकाल भी देंगे तो हमारे पास 4 फिंगर्स हैं जिसके ऊपर हम चल सकते हैं, और हम दौड़ कर भी दिखाएंगे, आपको जीत कर भी दिखाएंगे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को आप थ्रो आउट कर दें। तो ये सारा कुछ जो अंदर खाने जो पार्टी के अंदर ही चल रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप हो जाता तो उसके बाद दिक्कत थी एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने वर्कर्स को, अपने लोकल लीडरशिप को लाना कांग्रेस के लिए भी। तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए चुनौती था, और शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से आप देखिए कांग्रेस ने ये पूरा, जब से भगवंत मान का स्टेटमेंट आया कि वो अकेले ही जाएंगे, उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, तब से लेकर कोई ऐसा सख्त स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी खुद ही ये टाई अप जो है
इंडिया अलायंस का जो पंजाब में फॉर्मूला बन रहा था उससे पीछे हट जाए और हमें उनके साथ ना जाना पड़े। स्टेट लीडरशिप चाहती है। इसी वजह से आप देखिए कि कोई भी ऐसा अब तक सख्त स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ प्रगट सिंह सामने आए। प्रगट सिंह ने कहा कि हम जो चाहते हैं वो तो भगवंत मान भी चाहते हैं, फिर किस बात का गठबंधन, किस बात का अलायंस। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पंजाब की लीडरशिप तो आज खुश होगी जिस तरह से भगवंत मान ने खुद ही सामने आकर इस पूरे अलायंस को खत्म करने की बात कह दी है। Okay. So it's one thing is very clear, based on the analysis and discussions with all our panelists and colleagues from Punjab as well as West Bengal, is that all is not well with the India alliance. On one hand, the regional aspirations is taking over, and they are clearly showing the national party, which is the Indian National Congress, their place. But also in the places like Punjab, where the Congress performed very well in the 2019 election, all is not well within the alliance as well as within the party, and that leaves a very difficult and daunting task for the Congress party to put its house in order as well as its alliance in order. I thank all my guests for joining this, and I leave you with a series of sound bites detailing about how crucial this particular announcement made by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann is going to be in the general election 2024. Thanks for watching News9. Mamata Banerjee is the senior most leader of India Alliance Party. We are respectfully saying that if there is any concern in her mind, we will try and we will discuss and settle it. We are having a coalition of 26 parties. Here and there may be some issues. Finally, we will solve every issues. Today, I think that Mamata ji told about the Yatra also, Bharat Jodo Nyaya Yatra also. But on 15, the Congress President wrote a letter to Mamata ji. Not only Mamata ji, all the 26 parties in the India Alliance. And on the same day, Rahul Gandhi ji also wrote a letter to Mamata ji. There may be some specific details may be missing in that letter. That I also agree. Where it is coming, when it is coming to Bengal or like this. That miscommunication may be happened from our side also. We are ready to address that things. If any concern is there in Mamata ji's mind, we are ready to remove that concern also. We will go together only. Don't worry. Our Mamata ji's aim, what is the aim of Mamata ji? To minimize BJP seat in Bengal. What is our aim? Our aim is also to minimize BJP seat in Bengal. So finally it will come together. There never was an alliance to start with in the first place. The India alliance is a very unnatural alliance. It was a non-starter to begin with. How can you expect a strong alliance between parties which are ideologically not aligned, whose cadres fight on the ground with each other every single day on different issues, whose leaders have diametrically opposed views and worldviews? The TMC and the Congress party fights every day in West Bengal. The communists and the Congress party fights against each other in Kerala. I.N.D.I.A party and the Congress party fight against each other in Delhi. But they, in a desperate bid to stop the Prime Minister and oppose Narendra Modi ji, have come together in an unnatural fashion. This is a coalition of snake and mongoose coming together. It is as unnatural as that. Therefore, it has died a very natural death. In true way, Annapurna protected me. Annapurna made sure that I come back home and live this life and tell this story to the world. For me, Annapurna is my savior.
I'm Anurag Malu and I'm a mountaineer, and I've been told that perhaps in the history of mountaineering, I'm the only person that has survived 72 hours inside the crevasse. In college days, I had a chance to stumble across this person called Robert Swan, who walked to both the poles, and he became the first person to walk to North Pole and South Pole. When I heard his journey and story, that inspired me so much. During that time, I also wanted to do mountaineering course, but I knew my family during that time won't support me for mountaineering. So I waited because I knew that mountaineering is an expensive sport. Then in 2013, I went on this I.N.D.I.A International Antarctic expedition. And that solidified that, I knew that I want to climb mountains, but then I got busy in life like everyone else. And I was just traveling almost every week outside India. So I never had a chance to, focus on mountaineering. So when COVID hit, that's where mountaineering actually started in my life in true sense. I joined this, triple pass challenge that was led by Banerjee ma'am, and I had a chance to spend 3 weeks with her in the mountains. I started prioritizing mountaineering and then I never looked back. It's been almost 3 years. I started doing more 6,000 meters, 7,000 meters, and more technical mountains like Mount Dun in Ladakh, Mount I.N.D.I.A in Nepal, and Annapurna was going to be my first 8,000 meter mountain amongst all the 14 8,000 meter peaks. I reached Nepal on 25th of March, and initial 2 days I got ready. I had to buy a lot of gears and clothing, and then we reached Annapurna base camp on 1st of April. Good morning. 10 a.m. in the morning. It's quite windy outside. So when I reached the expedition, base camp, I was the only person there who is climbing Annapurna as their first 8,000er, because others have already made attempts to other 8,000 meter peaks, which are less difficult to start with, and Annapurna is pretty much many people's 10th mountain, 11th mountain, 13th mountain. So on 15th of April, I left for the summit push, and we started at around 10 p.m. in the night. Next morning around 12:30 or 1 p.m. I was less than 130 to 140 meters, below the summit of Annapurna. But the weather was changing. In afternoons, the weather in Annapurna gets drastically changes, and the best thing that you can do at this time is descend down. So I decided to come down and make an attempt a couple of days later, 3-4 days later, when there is another good window. So on my way from camp 3 to camp 2, I picked a wrong rope. There is no control, and it takes fraction of seconds for you to, because gravity is there and then you're straight inside the crevasse. So I have no memory of my days inside the crevasse. Now after coming back, I had a chance to look at my GoPro footage that I have recorded inside the crevasse, and it's surprising to see this, that I was conscious the whole time. Someone would come and rescue me. Hey God, hello. No one ever in the world mountaineering history has ever survived 3 days inside the crevasse. I've made a video, and that was the last video where I'm saying goodbye to everyone. I think now it's my time.
No one knew, how to create the right pulley systems to rescue me out from the crevasse. Only Marius and Adam knew, where Marius was outside the crevasse. He was making the pulley systems and taking care of all the ropes part of the system. And Adam went inside the crevasse till 60 meters. He couldn't see me, he couldn't spot me. So the first miracle that happened was that he was carrying that particular day a 70-meter rope, which is a rare phenomena. If you are in mountaineering, you would know that no one carries a 70-meter rope for rescue. They always generally have a 50-meter rope. So the first miracle was that he had a 70-meter rope and I was found at 68 meters, deep inside the crevasse, covered with snow, and then he could see my helmet and can spot there is someone lying there. When he saw that my eyes were moving and I had a fainted heartbeat, that turned the whole recovery mission into a rescue mission. Wait a minute. Okay. Two left. On 20th morning, I was rescued at around 8 a.m. in the morning, and I was taken from base camp quickly to Pokhara. Where doctors obviously declared dead, in first 30 minutes. But my brother Ashish pushed them so much, and he told them that he's alive. He pushed them. Somehow they strike this chord, and they continuously gave me CPR for first 2.5 hours, and then they saw the movement here in my vein here. After 4 hours, when my heartbeat got a little stable, they quickly airlifted me from Pokhara to Kathmandu. One fine morning when I woke up, I know that nurses were dressing me. I was always craving for water. Like whenever a nurse gives me a drop of water, that was my blissful moment. And then I was brought back to India in a private charter and then taken to AIMS. At AIMS, I was in trauma center for initial 21 days. They had the hardest time in even understanding what part of the body they should treat first. My kidneys are infected, my lungs, I had dialysis in Nepal, almost 8 times. My heart, my liver. So my internal core organs of the body has almost given up. When I'm trying to even, move my, head, I'm not able to move anything. Not able to lift myself up, not able to sit or do anything. So I was in ICU during that time. Then I was transferred to the burns and plastic reconstructive surgery department. That's where I undergone almost 5 or 6 surgeries, where the skin was grafted on my damaged, body parts. And isn't it less than any miracle, where someone who has been bedridden for 5.5 months can now today walk, climb stairs, For me, I have not even thought this would be possible for me. If it was not for AIMS, I don't think so I would have been here. Like, we talk about a lot of miracles in my journey, but I feel the biggest miracle for me is the medical science, what doctors did. Without this experience or this, Annapurna incident, I think my life would have been incomplete. I feel this is the most important part of my story, that I am here to live. In my new challenges, with my new challenges, and coming out of this
much more stronger, and hopefully that I can do pretty much everything back in my life that I used to do before. And that's the challenge I have taken upon myself, that I want to climb this mountain of coming back with full force, in full action in my new life that I have been given. Why is the state not looking at putting an embargo on that? As a Telangana person, I will not accept. How do ordinary folks deal with this? Since the last 2 years, Khalistani terror groups are threatening Indian diplomats in Canada, US, UK and Australia. Investigations of these threats led us to the first ever abduction and killing of an Indian diplomat, Ravindra Matre, in UK's Birmingham in 1984. Our months-long investigation finally led us to the murderer of Ravindra Matre, who has been hiding in Pakistan-occupied Kashmir for the last 40 years. Watch our exclusive documentary, Murder of an Indian Diplomat, where we reveal the man who killed Ravindra Matre. Stop searching, start streaming. Download the world's first news OTT, News9 Plus, ahead of the curve. How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? जानना है तो देखिए